Hello friends, welcome to Unacademy, which is the largest online education platform for GATE, CS and IT. Myself, Malisham Devasane. I'm working as an educator on Unacademy, where you can visit my profile www.unacademy.com/DevaGateCSE. In this session, I'll be discussing and sharing the very important information, that is undecidability concepts. So today is purely theoretical concepts where you need to understand every word that I deliver in this session. So have pen and paper so that if you write a more number of times, you will remember the words as well as remember the definition. So be ready for that if you are watching this video, whether it is live or recorded. Fine. So this is my referral code, DEVALIVE. So what is the benefit of referral code? Basically, it gets an access to the free classes on Unacademy. Second, you can take the subscription on Unacademy with 10% discount. So you can use my referral code to get the benefit of that two things, but it is not limited to my courses, my classes only. You can visit any class, any course on Unacademy with this referral code, remember. Fine. If you have any friends who want to join Unacademy, doesn't matter CS and IT or any other branch, you can refer my referral code, right? And if you want to know about my background details, I worked in various institutes, and today I'm working on Unacademy, which is the first time I'm working as an online platform educator, and where I have already taken classes for C programming, TOC and CD, many classes too. Yeah. Sambhav, namaste. Good evening, Satyajit. Yeah, Anvesha, good evening. Yeah, good evening guys, everyone. If you're watching this video, please like the session. That is only the respect that you give to educator, and we are very glad that you are coming to the live sessions, and I'm very happy to teach you. Yeah, this is again my referral code DEVALIVE in case you require to access the free classes, and plus and iconic 2 paid subscription plans on Unacademy. For that also you require my referral code, whether it is free or paid. This referral code is very important. And what is the advantage of that? You will be having well planned live classes. So if you are going for 2022 and 2023, this is the right time to take the subscription, where the batches are going to begin soon. And what are the advantages you will have? You will get a chance to learn from top educators of India, and every course will have weekly test and doubt solving sessions. So plus already having enough benefits. But in case you don't know how to prepare and you are expecting someone to guide all the time, then Iconic is the best suited. You will assign with a coach, and you will have separate prepared study material, and that helps you to boost your preparation as well as confidence, right? Study plan, booster sessions and test analysis, additional benefits in Iconic, right? If you want to know about me and my free classes, I took a lot of quizzes on Unacademy free classes, all-in-one sessions to practice, and special topics in many subjects like TOCC, CD, discrete algorithms, and daily practice problems and PYQ series on many subjects. These all sessions are absolutely free, and this many are free. Still, why do you need to take the subscription? That is the difference between free and the paid courses, right? If you are not able to come to the paid, you are always there, but you don't know what is exact way to prepare. You need to take decision. Any course we plan, it is not well planned on special free classes, because it's just 1 hour session all the time, remember. Yeah, if you are very new to Unacademy, that either you can visit unacademy.com URL and then log in here using DEVALIVE referral code, or you can install the Unacademy learning app using Play Store. So either access using mobile or using browser, it is your choice, and choose the goal, GATE and ESE. And you are from mechanical, electrical, civil, CSE or any branch, it's the same goal for us, right? Subscription is applicable to same for all, right? Yeah, you can search directly free classes if you want by going to the search place. In case if you are looking for plus or Iconic, these are the buttons there. You click either plus or Iconic, but before that, look at which you are opting, which you want basically. And if you are going to take the subscription, you are getting the chance to learn from India's top educators, and you have many more on Unacademy too, and many more top educators are also going to join soon. So all benefits are going to be available to you. And plus, if you are not aware of the plus,
Look at 1.5, 2 years. You have different prices like 27 to 25 after including after applying a referral code. So if you are following me, you can use my referral code, or if you are following somebody else, you can follow anybody referral code. But Unacademy, every code is equal. Remember that? It doesn't matter which code you apply, every code is equal. But yes, so it is important. If you are following me, please you may apply. Okay. And Iconic also, you have two popular plans, 1-2 years. So after applying my referral code, you will have 45 to 25, and for 2 years 66,600. Right. If you don't know about other batches that are going to begin, and the new batch is going to start from 21st December. It started, and 28th is going to be started for mechanical and civil, and CS and IT will be announced soon once we plan it. These are the new initiatives, and today I have not taken many classes, but we have, after this 10 p.m. we have one more session on Unacademy. You can, but these are tomorrow free classes. Tomorrow, guys. And here, yeah, all are planned, yes, as per 8 a.m., 9:15, 11 a.m., 2 p.m. Except the 11 a.m. all classes are free. Especially you are preparing, sorry, especially you are preparing for 2023, and this is absolutely going to help you. Algorithm preparation strategy for GATE 2022 and 2023. I'm going to help you what textbooks can be preferred and what topics are there, what is the weightage, and how to prepare basically this algorithm subject. I'm going to help you in that session tomorrow 7 p.m. on Unacademy. So all are free sessions except 11 a.m. and we'll meet back at 8:15 tomorrow on this YouTube channel. There is one more session 4:30 p.m. on YouTube. That is GATE PYQ series of TOC. Yeah. So please note down the schedule if you are following my classes. These are the classes where I am going to take tomorrow. You can follow me. Yes. Nagendra, good evening. Sristi, good evening. Shivam, good evening. Vishal, good evening. Yeah. Some topics, yes, always have the confusion. The reason is we don't understand the statements. Right. And remember, guys, confusion is there everywhere, but when you try hard, you will have a clarity. So I have only one suggestion for everybody. Where there is a confusion, give more time to there, you will have a clarity. Remember that time is proportional to clarity. If you don't give time, you will have less clarity. Remember, okay, that is only my suggestion. I have many doubts in the world, but when I give the time, I will get a clarity. When I don't give the time, doubts will be doubts. No doubt about it. Fine. Yes. And in previous session, we have completed Turing machine and including closure properties of recursive and real. Now today, we are going to see undecidability. And I am going to be very slow. Every word, if you are understanding, if you are following me, and definitely you will have a clarity. I don't know where you have studied before this session, but after this session, you should get some clarity on each word that we speak. Right? I can say something, guys. Please like this session. I request everyone, if you are watching this video, please like the session. Yeah. Okay. Now, in this session, I am going to give a clarity on 5 words. One is decidable language. Yeah. I am going to see what is decidable language, what is this word RE but not recursive, what is not RE language, what is RE language, what is undecidable language. As long as you don't understand these 5 words, there is no use of entering into this chapter. The first concept. Everybody clear? Whoever have a clarity on these words, they can start understanding the problems of this chapter. I am pretty sure you might not have a clarity on these words. That is the reason you might get a problem in each question that I ask. Okay? So that is the first thing. And we are going to see what is the difference between language and problem. There are 2 things.
As long as you don't understand this difference, again one more issue you will have, the difference between these two, because we are going to use two words, decidable language. Definitely that should depend on decidable problem, no doubt. Now I ask you, do you have a clarity between decidable language and decidable problem? When you don't have a clarity, then you must listen every word that I use in this class. Clear? Yeah. So I want to remember every word that I deliver in this session. Then in the next session we will solve many problems. You will not have any problem absolutely, because I am going to explain. Okay, please follow these words first. Let's begin. What is decidable language? And then I will explain what is decidable problem. Definition only. Definition only. Remember. Fine. Let's start. What is decidable language definition? Basically, guys, what is decidable language? What is it? Where it stands? Where it stands? Let me show you. Let me show you. Before beginning, let me show you. If you look at the Chomsky hierarchy, okay, I can draw many ways. I can draw many ways, but I'm trying to show you one way first. I'm trying to show you one way first. Follow this way. These are the three classes we always worried now. Okay. This class is basically has all, here you will have all decidable languages, means all recursive languages inside this white box. How many decidable languages? Like D1, D2, D3, so many, so many, so many, guys. Clear? The first class that you have to follow is recursive languages. These are also called as recursive languages. Every decidable word you can replace with recursive, remember. And these are all RE languages, means including D, others also RE, including D, remember, including D. But this white have, this has different name. These are all RELs only, but they are not recursive. Not recursive, you can say not decidable. Everybody, here I can give some name like L1, L2, L3, L4. Such languages are infinite. They are RELs but not recursive. In case if I ask who is REL, you have to say even decidables as well as which are not decidables, but inside RELs both are RELs only, right? So most of the people, they have a confusion here. What are they trying to speak? As long as you don't keep this in your mind, this picture in your mind, you will never speak the proper way. Okay, I'm going to come to this sentences later. Next one, I'm just saying that all languages here, doesn't matter which language you take, but here there are special languages which we are talking about, that is not RELs, NR1, NR2. How many languages are there like that? Infinite not RELs are there, infinite. But they are only this one. They are only all not RELs. Outside the yellow box we don't care, because we are not talking about non-languages, right? We are talking about only languages. Fine. Everybody, this is the important class diagram, but this class diagram can be visualized some other way too. Some other way too. Before that, there is another word you must remember, this one, from here to here is actually called as undecidable languages. Undecidable languages. Remember guys, from here to here I am talking about, here to here. That means outside decidable, everybody is undecidable, including some of the RELs. Including some of the RELs. Now, these words we need to learn lot rather than the definition first.
what is undecidable, what is decidable, what is this, all names. And as long as you don't store the words here, there is no use of solving the problems. Fine, let's comfort with the words first. And before beginning again, same class diagram, I have another way to do. But don't surprise by looking at this diagram. This is also same. This is all languages, guys. This is all languages I'm talking about. All languages in the world. And here I'm going to divide some way. You can see that how I'm going to divide. Here, okay, sorry. Look at this. Here we have all decidable languages. In this, like just now I told you D1, D2 and so on. Like this is D1, D2 and D3. That is inside, right? And outside of this decidable, just outside, I just told you L1, L2. There is no common thing, right? There is no common thing. Such languages are infinite again. These all are RELs but not recursives. But not decidables or recursive. And I told you these are not RELs. But what is the relation that you must understand slowly? All not RELs comes here. Now there is a problem. Where is REL here? Where is REL, guys? From here to here. From here to here. That are all RELs, including decidable. This REL name only semi-decidables. All semi-decidables. Remember, another name of REL, that means including decidable, including REL but not recursive, both are semi-decidable only. All decidable also semi-decidable. Even this one, which one? This from here to here, all are undecidable. All undecidable comes this side. But people, what do they do mistake? They only assume not RELs are undecidable. But wrong. Some of RELs also undecidable, guys. And look at the words game. If you don't understand the words, there is no use of solving the problem. RELs are also undecidable. Some of the RELs are undecidable. Some of the RELs are decidable. And semi-decidables can be decidable, can be undecidable. Remember, semi-decidable can be. Yes or no? Look at this problem. Right? Look at this one. All of them are semi-decidable. But here, there are decidable, there are undecidable. And here, look at this. These all are undecidable. Some are what? Some are RELs, some are not RELs. Everybody, look at this. Here, there is in center, which is REL, but that is semi-decidable and that is undecidable. And you can give the name for them. We can give the name for them. These are actually called as semi-decidables and also called as undecidables. Remember, this side, they are undecidables but not semi-decidables. The first one is just decidables. Everybody? Yeah, these words are going to play a lot before understanding the chapter. I don't care whether you know the definition or not. First, at least know the words difference. Clear? Then we will start one by one. What is the meaning of each word? What is the meaning of each word? Just, I'm asking you everybody. One more time. Look at how you remember this. And there is one class. This is one class. And this is another class. Yes or no? First, here these are decidables. These are undecidables. Everything.
Decidable problems, undecidable problems. And there is no common thing, remember, it might be, crossing, but there is no common thing. Remember that. And here one more problem. Some of undecisidables also, which comes under here, this all are what? Semi-decidables, this including everyone. Semi-decidables, everybody. So remember these relations, you will understand. Remember these relations. Decidable is semi-decidable, and some of the undecisidables also semi-decidable. So when you have a clarity between these words, then you can start doing it. But these are very special, we know. These are not RELs, and these are RELs but not recursive, and these are decidables. That's already written. But semi-decidables is very special, and undecidable is also very special. Yeah, clear this point? Hi Madhuri. Everyone? Yeah, good evening Sweta. Good evening. Can you remember this class diagram? If you can remember this class diagram, I can proceed to do something about every word. Clear? Let's start with every word. Every word we are going to play. Now, आपको पता होगा आपको पता होगा, if you don't remember the word, there is no use of definition, right? Yes, I'm not here to clear doubts of some other topic. If you have any doubt of my words I explained, you can ask. I do always one mistake, looking at a chart. Okay, fine. Definition. What is decidable language? What is decidable language? What is the meaning of every language that is there in the decidable class? One language I'm talking about. See guys, if the language is decidable, L is decidable, L I am talking about. How to say L is decidable? That means L is recursive. Another name is, how to say L is recursive language? Not one definition. Many definitions are there guys. If and only if means equivalent I am talking about. If you want to say L is recursive, because another name of decidable only recursive, you have to prove that L is recursively enumerable language. Not only that, you have to prove L complement is also REL. Did you remember the last class how this is connected? Complement of recursive is a recursive. Another way to say that complement of recursive is recursive. Prove that L is REL and L complement is also REL, automatically L become recursive. Another one. Instead of saying REL, you show that L has Turing motion to accept, and L complement also has Turing motion. Enough, you can prove that L has halting Turing motion. It means indirectly L has halting Turing motion to accept. Everybody, so many ways to understand one problem. You need to speak carefully what is the decidable language. Everybody, I can prove now. How do I know that L has a TM, L complement has a TM? How can I say that L is recursive language? I can prove that. See, suppose assume L has a TM. I'm proving it guys. That statement I'm proving it. People don't believe it, but I'm proving it. You can also look at the class diagram if you want it. L complement has a TM. These are known to me. Then how can I believe now L has halting Turing motion? You look at it. These are known. Remember that? These are known to us now. Now how can I prove? How can we prove L has halting Turing motion? So that I can say L is recursive. So I'm going to do something. Okay, I'm assuming you can give some W. Let's say W you can give here some input.
Then what this two Turing machine does basically, they only tell you one thing. If W belongs to L, you will have a logic. That is a definition of Turing machine. Here W belongs to L complement, because L complement is another language now. Logic exists. And using these two, I can build a new machine that always halts now. I'm building new yellow machine, guys. This machine is designed with the help of two white machines. How do I do that? How do I do that? Look at. I give a W to this. I'm going to show you a logic for both sides. Right? I'm going to prove that. How? Look at. This W I give to this machine. If this machine halts, then I will take the same logic here. If that TM1 I need to take. This is a TM1, TM2. If TM1 halts at final, then new TM, that is a new TM here. New TM I am building, that is going to be always halts. It means halting Turing machine. It means HTM. I'm going to build to accept L. Remember, to accept L. So W belongs to L. W belongs to L or not belongs to L. I'm going to show the logic. I have a logic. Same logic. Copy paste the logic of the TM1 logic. And copy paste the logic of this. Why? Because if W belongs to L complement, it means W belongs to L complement, it means W not in L. Yes or no? W in L complement means W is not in L. And the same logic copy paste. If TM2 halts at final, the new TM halts at non-final. If TM1 halts at final, new TM also halts at final. Then this is HTM. So we proved that L has logic for valid string. Valid strings also we have a logic, and invalid strings of L also has a logic. So this machine always halts, always halts. And whether TM1 doesn't halt, TM2 doesn't halt, we don't look at. We only look at valid strings of TM will become valid strings of new TM. Valid strings of TM2 will become invalid strings of new TM. Everybody, so now I have shown you that L has HTM. Everybody, because same logic. What? TM1. If TM1 halts at final, what do? A new TM halts at final. That is the logic. And here, if TM2 halts at final, what we say? A new TM halts at non-final. Non-final, change the word. Non-final. It means we can halt for the both strings, whether valid or invalid. Yeah. Clear this point? Everybody? And just one word, guys. How much meaning is there? It looks like today you read this line, but tomorrow you forget. But if you know the meaning of that line, you will not forget tomorrow. That is what the beauty of the English word. Sometimes you may not understand by reading, but you can understand by proving. Look at that. You may not understand by reading, but you can understand them by proving. So I proved this line. Tomorrow you will never forget if you can look at that proof. Because L has a TM, L complement has a TM. Now I can say that L has halting Turing machine. It means L is a recursive language. Now I can say if L is RL, L complement is RL. Now you can say that L is a recursive. Everybody? Everybody? Now onwards, if you forget the definition of decidable language, even God cannot help you. Remember that. Now before this, did you remember this line? Did you remember this definition? Or did you prove this definition? Right? If you didn't prove, definitely you can't understand the problems too. Okay. Now do not forget this line. L is RL, L complement is RL. Now what I have proved here? What I have proved here? What I have proved here? L is, just look at here. If anybody is given as L is RL and L complement is RL,
I have proved it. The L is recursive. L is recursive. By taking those two RLs. Clear? Can we go to the next word? Can we go to the next word? Right? Now, this is about L, guys. Basically, L means a language which will definitely has a strings. Remember, here this W1 basically we call input string or string, but basically this can be language, but this can be a machine, this can be a grammar, or this can be expression. It all depends on our choices. Now you should forget about A, B, B, A, all these things. The W1 can be anything now onwards. L can be set of strings, L can be set of languages, L can be set of machines, L can be set of grammars, L can be set of expressions, but all are languages, guys. A language can be any. Language can have any element. Everybody, are you understanding what I am saying? Remember, the valid string when I speak, valid member when I speak, member need not be just AB. It can be a machine. Okay, anyhow, this is not easy right now. Let's move on. Now, what is decidable problem? And previous one, every language is a problem, guys. Every language is a problem. But problems we have a different way to represent. Problems we have like is given string accepted by given machine. Now here the language, where is the language? No, it is a problem now. Previous one was the language is a set of elements, set of members. This is set of inputs or members. Valid strings, you can say. This is a set of elements. Every member belongs to language. Now, where is the language? This is a problem. This is a question for you. I am giving you string. I am giving you Turing machine. Can you understand that string is accepted by that TM? Can you understand? Everybody, this is the problem. In my sense, this is a problem. But don't forget, the previous one is also problem, but represented different way. Now, these problems we deal different way too. Now, this problem, we try to build something. This problem, we try to build a Turing machine, guys. How? Here, we are going to do something. Input can be string. Assume this is a W also given and TM also given. Now you need to understand, is that W belongs to language accepted by TM. Here halting at final means yes. Halting at non-final means no. If yes, no, both have a logic, then only we say it is decidable. Now it's going to be different case, guys. Now we don't say belongs to L, not belongs to L. S means W accepted by TM. No means W not accepted by TM. But do you have a logic for this? That is a question mark. Are you clear? This is one problem in the world. Do you have a logic for this? And do you have a logic for this? If you have a logic for both, then I will conclude this problem is decidable. Now, decidable, I'm going to... Where is the language? Guys, look at... You don't know. You are also trying... We are trying to build a Turing machine too. We are trying to build a Turing machine here. And given Turing machine, we are trying to build a Turing machine. Both Turing machines you are dealing here. Remember that. Both Turing machines you are trying to deal. Input is a Turing machine and you are trying to build a Turing machine. पहले problem ही समझ नहीं आता. Given problem is decidable or undecidable. When will you say it? Are you clear? Right? So first, have you understood the difference between language and problem? Let's look at language. Let's look at a language. Language, let's say L. I'm saying, guys, language. L, I'm just writing, look at that.
look at that. Some language, don't worry about it, don't worry about it. DFA such that प्रॉब्लम डेफिनेशन नहीं आया, आज डेफिनेशन की बात है, डेफिनेशन की बात ही चल रहा है. अगर आप समझने के लिए कोशिश करोगे नहीं होता. फॉलो द डेफिनेशंस. DFA एक्सेप्ट्स लेट्स से AB. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स नॉट वन DFA, it is the set of all DFAs, set of all DFAs where every DFA accepts AB, where every DFA that you kept in the language accepts AB. It means you might have something like that, you don't know what is that, but somehow AB, okay, you may have a B, you don't know what is that, that's okay. That's okay guys. This is a one machine, this is a one DFA, like you have so many other DFAs here. Infinite DFAs may or finite, doesn't matter to me. Are you clear this point? This is what a language is now. Understood what I am saying? Now this machine we will call as a string now. This is our string. This is our string now. Everybody, if you want to assume this is a string of L, string of given L, member of given L. Remember that. Now problem. Problem is different here. This is also problem, but problem we represent different way now. Whether given DFA, I don't know which DFA I give, accepts given string AB. ये तो हम DFAs कलेक्ट नहीं करेंगे, एक ही DFA आएगा, पता नहीं क्या DFA. Are you clear? Everybody? Now you need to say yes or no. Yes or no. Here belongs to L or not belongs to L. Here yes or no. That's all. Two answers comes. Two answers comes. How do you understand this carefully? How do you understand this carefully? Like this. Here also you try to build a logic. Here also you try to build a logic. But here inputs are. Guys, if it is AB is fixed, let's say this is the fixed. Then one side you can give AB. Other side start giving DFA1, DFA2, DFA3. कुछ भी inputs are infinite DFAs guys. एक एक DFA पे आपको algorithm run करना. You are trying to build a Turing machine for that. You are going to produce only the DFAs which accept AB. The other side क्या होता? This is also trying to build a TM, but यहाँ पर एक DFA आएगा, एक string already दिया हुआ है externally or internally, and यहाँ पर बताओगे yes or no. Did you understand the difference between a language which has DFAs, a language, not a language, a problem where you are trying to decide something? Everybody, look at the two kinds of natures, two kinds of properties where dealing with languages, dealing with problems have a relation, but the way you speak is different. But if you want to answer language guys, you need to solve the problem first. If this problem is decidable, then only language is decidable. Remember, the problem बताता language decidable है नहीं. अगर problem undecidable है, language भी undecidable है. अगर problem semi decidable है, language भी. Problem जो बोलेगा, language भी वही करेगा. Because on every DFA you do the same algorithm, same logic. ये दोनों का link चाहिए हमको. I don't know how many of you are following this language and problem definition, but दुनिया में यही दिक्कत करता. Have you realized ever decidable बोलते? Are you talking about a problem or language? Clarity होना चाहिए. Clarity होना चाहिए. Because the problems are the first priority for us. If you have these problems, then we can understand algorithm exists or not. Then you can apply to the language. Everybody? Everyone? Let's move on. Let's move on. What is decidable problem? A problem is decidable. Now I'm talking about problem. A P is decidable. P is decidable. If and only if yes and no both have logics. Both yes and no have logics. Means both yes and no have the Turing machines. What does that means? What is that means? Look at. Right.
Okay, definition only this is there. Now how can you answer the problems? When it comes in front of you, you will never have the patience, you will never understand, because at single word you have much intention, right? You need to put much intention to understand. Okay, whatever it is. This is a problem, guys. I'm going to solve a problem. I'm trying to build a logic, right? So you give an input. Input कितना है? 1 हो सकता, 2 हो सकता, कभी कभी 3 भी हो सकता, पता नहीं क्या इतना होंगे. Input or inputs. Remember, input or inputs. We are going to decide them. Input or inputs. 2 ट्यूरिंग मशीन आएगा, नहीं तो 2 DFA आएगा, एक DFA एक PDA आएगा, एक स्ट्रिंग एक मशीन आएगा, पता नहीं. ये तो प्रॉब्लम ही अलग है. Everybody, now we are going to understand that input. Now अगर S के लिए भी लॉजिक है, नो के लिए भी लॉजिक है, एस के लिए भी लॉजिक है. एस हैज द लॉजिक, नो एज द लॉजिक, मतलब इनडायरेक्ट ट्यूरिंग मोशन है इज देयर. then we say the problem is decidable. Everybody, this problem, whatever the problem you are dealing right now, example अभी तो दिया ना DFA वाली guys. एक ऐसे DFA है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ प्रॉब्लम के लिए. आपको तो अल्गो मालूम नहीं है, बाद में बताता हूँ उसका अल्गो क्या है. दिस इज ए प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई एम सॉल्विंग वन प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम गाइस? आई एम सॉल्विंग is W accepted by DFA. Two things are given. What is given? W is given and DFA also given. But what you are trying to do? You are trying to build halting Turing motion. I am showing that HTM exists. How do you show that? If you can show me yes and no, they are having a logic, means they always halt indirectly. This has the logic. Logic exists. Show that logic exists. No, also show that logic exists. If you can show both of them, I can decide, okay, this problem is decidable. This is a problem. This problem, you want to prove decidable, then show that yes and no have a logic. Everybody? अरे किसको पता DFA accepts AB or not? कुछ भी हो सकता है ना. DFA में accept हो सकता, नहीं हो सकता. Depends on given DFA. Depends on given DFA. Empty language दिया तो DFA will never accept. यूनिवर्सल लैंग्वेज की DFA है, वो एक्सेप्ट करता. डिपेंड्स ऑन गिवन DFA ना, राइट? डिपेंड्स ऑन द DFA, बट DFA is unknown. This algorithm should work for any DFA in the world. If it is working for one DFA, it is not working for other DFA, you are not able to say yes and no, that's not halting Turing motion, remember. Fine, this is the intention of decidable problem. Then we say problem is decidable. You want to say decidable, show that yes and no have a logic. Yes, whether it is yes or no doesn't matter, but show both of them have a logic. If this DFA doesn't accept AB, show that this is not accepting. If it is accepting, show that it is accepting, right? Then we believe this problem is decidable. Fine, I'm not talking about one DFA, I'm talking about every DFA in the world. So it's just, problem is like this. You can give any input, you can ask any question on that inputs. If I can say yes and no clearly, that problem is decidable. Is that clear? Is that clear, everybody? Decidable problem. Undecidable language, repeating. Suppose I have given you language. Show that HTM exists to accept language L. Then we say L is recursive. Recursive means decidable language. How do you show that? Give me any input. Of course, one input at a time. Give me any input. Show that W belongs to L. Show logic exists. Whenever string is not in L, that also show logic exists. Then I believe I have a halting Turing motion. This is how language we show.
In the language, we give input, we are looking inside the L exist or not, right? Yeah, everybody fine. क्या गेम चल रहा है चार्ट में? चंदू के चाचा हाय चंदू. Okay, now let's move on to the problem. Names today, names only guys. RE but not recursive. ये कहा रहा था, ये REL के अंदर है बट लेकिन डिसाइडेबल से बाहर है. REL के अंदर है, डिसाइडेबल से ऊपर है. क्लास बता रहा हूं मैं. एवरीबॉडी, दिस लैंग्वेज डिसाइडेबल क्लास के ऊपर है और RELs के अंदर है. इसका नाम क्या? दूसरा नाम है इसकी, बोथ होना चाहिए. SD, जस्ट SD इज नॉट एनफ. SD एंड UD दूसरा नाम है, वो दूसरा नाम है गाइस. यस, रिमेंबर, दूसरा नाम है इसकी. REL के अंदर है बट डिसाइडेबल के बाहर है. REL के अंदर है मतलब सेमी डिसाइडेबल के अंदर है बट लेकिन डिसाइडेबल से बाहर है. दोनों मिलके बता दो ए सिनोनिम. क्लियर? सिर्फ SD बोला but every SD need not be RE but not recursive. Remember that. ये synonym नहीं होता, implication होता. तो ये बोलने से पहले एक बार क्लैरिटी बनाता हूँ. What is the relation between semi decidable and decidable? एक लाइन लिख लेता हूँ. Can I say that every, okay, language बता रहा हूँ guys, language, every decidable language, can I say that semi decidable? ये पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट करता, एवरी डिसाइडेबल लैंग्वेज बोलता नॉट सेमी डिसाइडेबल. मुझे कैसे पता? बिकॉज आई ऑल्सो डिड अ मिस्टेक एज अ टीचर. एवरी डिसाइडेबल लैंग्वेज इज सेमी डिसाइडेबल. मुझे ये पता नहीं था ये सेमी डिसाइडेबल REL को बोलते. अनदर नेम ऑफ REL ओनली सेमी डिसाइडेबल गाइस. ये पहली पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट, some semi-decidable languages are decidable and some semi-decidables are undecidable. ये वर्ड याद रखना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट. जो अनडिसाइडेबल है उसको बोलते हैं RE बट नॉट रिकर्सिव. इसके अंदर एवरीबडी, वही तो डेफिनेशन नहीं आया ना देवराज. डेफिनेशन तो शुरू होने वाला है. अब तो डिफरेंस बता रहा हूं. डेफिनेशन तो आया नहीं अब तक. एवरीबडी, व्हाट इज सेमी डिसाइडेबल डेफिनेशन ही आया नहीं, बट लेकिन ऑलरेडी तो कर चुके हम एक बार. एंड ये समझने आता आप आगे नहीं जा सकता. हमेशा एक वर्ड नहीं आता उसको समझ के ही आगे जाओ. एवरीबडी, या exactly, semi can be undecidable or decidable. Exactly, but which undecidable? This undecidable. Semi decidable and undecidable means outside the recursive but inside the REL. Remember that. ये क्या बोल रहा है? ये decidable languages, ये है semi decidables. इसको बोल रहा हूं मैं. इस लैंग्वेजेस को बोलते RE बट नॉट रिकर्सिव. इसी को बोलते RE बट नॉट रिकर्सिव. राइट, इसी को बोलते RE बट नॉट रिकर्सिव. ये जो इसका बीच में रहते, डिसाइडेबल से बाहर, सेमी डिसाइडेबल से अंदर, दो क्लासेस डील कर रहे हैं हम. एवरीबॉडी, इसका नाम ही अलग है, RE बट नॉट रिकर्सिव. RE छोड़ना नहीं, RE बट नॉट रिकर्सिव. RE बोल दिया ना, डिसाइडेबल भी RE होता. बहुत कंफ्यूजन होता गाइस, इसलिए लोग को समझ नहीं आता वर्ड्स को कैसे यूज करें. इसको भी RE बोलता, इसको भी RE बोलता, बोले विच RE? वो नॉट रिकर्सिव वाली है. तो क्लियरली बोलना पड़ेगा ये RE है बट नॉट रिकर्सिव है, ऐसे बोलना पड़ेगा. एवरीबॉडी क्लियर दिस पॉइंट? चलो डेफिनेशन समझ लेते. इसलिए स्पेशल क्लास, मुझे मालूम नहीं गाइस
if you go for any YouTube channel, any lecture in the world I am talking about, is anybody concerned about the words of this chapter? I will guarantee that. आज के बाद हो सकता, बट आज तक मुझे भी नहीं मिला ये वर्ड्स कोई एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट? आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट go to world, I'm talking about whole world. Just is anybody focused only the words of this chapter, only words of this chapter? मैं हेडिंग भी लगा के आया वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. जिसको ये वर्ड्स में क्लैरिटी नहीं है, जिसको इस वर्ड्स में क्लैरिटी नहीं है, वो इस चैप्टर का कॉन्फिडेंस नहीं होगा. आर यू क्लियर? पता नहीं ये कल सुबह तक चलेगा, मैं चला दूंगा, पर नहीं होगा, 1 घंटे में कर लेता हूं. राइट, आगे चलते. नाउ सेकंड वर्ड, आई एम एंटरिंग सेकंड वर्ड गाइस. डिसाइडेबल लैंग्वेज एंड डिसाइडेबल प्रॉब्लम हो गया. ये वाली, ये लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज है ना, तो क्या बोलोगे? L is RE बट नॉट रिकर्सिव. अगर ऐसे कोई बोल रहा है लैंग्वेज को प्रॉब्लम को नहीं, लैंग्वेज को, तो क्या प्रूव करना पड़ेगा? इफ एंड ओनली इफ प्रूव करो L has the Turing motion, but you guarantee no TM exists for L complement, but L complement has no TM. तभी बोल सकते हो उसको L is within RE, but it is not in recursive. Everybody? Exactly. Semi and partial are same words. Semi decidable, partially decidable, exactly English words. Fine. बट आगे बहुत कुछ है. अनडिसेबल बट पार्शियल, अनडिसेबल बट नॉट पार्शियल, इसको समझ लेते बाद में. यस एवरीवन, इसका मीनिंग है यल आरएल के अंदर तो है, इट इज कॉल्ड एज आरएल, बट कॉम्प्लीमेंट बनेगा नॉट आरएल, बिकॉज उसका ट्यूरिंग मशीन नहीं है ना, कॉम्प्लीमेंट का ट्यूरिंग मशीन नहीं है ना, तो एल कॉम्प्लीमेंट इज नॉट आरएल. अगर कोई भी दुनिया में एल को ऐसे प्रूव किया, बोल सकते एल इज अनडिसाइडेबल एंड सेमी डिसाइडेबल, एंड वो आरएल के अंदर है, बट लेकिन वो डिसाइडेबल नहीं है. क्लियर दिस पॉइंट? अगर कोई भी इस वर्ड्स को भूल गया तो काम खत्म, आगे समझ नहीं आएगा प्रॉब्लम क्या है. एग्जैक्टली, रिकर्सिव ऑल्सो हैज. Now, if and only if L is semi-decidable means REL. L is REL. That's true. And it is also undecidable. ऐसे कोई प्रूव किया ना, आंसर ओवर. Undecidable means not recursive. Undecidable means not recursive, guys. कोई भी प्रूव किया ये outside the recursive और इनसाइड द आरएल, आंसर इज ओवर. इट इज ओनली आरई बट नॉट रिकर्सिव. देखो कितना वेस्ट बोल सकते हैं एक नाम को. इस नाम को जो याद रखेगा उसका डेफिनेशंस क्लैरिटी बनेगा. चलो आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास. ये लैंग्वेज है, क्या करना पड़ेगा इसको? यू हैव टू प्रूव दैट ऐसे वाली. इन केस एल इज कॉल्ड एज REL बट नॉट रिकर्सिव. इन केस if it is true, to prove that TM accepts, show that TM accepts L. कोई भी स्ट्रिंग दे दो इनपुट, क्या प्रूव करना? W belongs to L है, W not belongs to L है. आपको प्रूव करना पड़ेगा W belongs to L has logic. इसके लिए लॉजिक ही नहीं है, ऐसे नहीं बोलना मे और मे नॉट लॉजिक, बिकॉज ये स्पेशल TM है, ए स्पेशल ट्यूरिंग मशीन. ये स्पेशल ट्यूरिंग मशीन क्या करता? ये हमेशा ट्यूरिंग मशीन ऐसे ही होता. रिमेंबर दैट, हैज नो लॉजिक. इसको लॉजिक कोई भी डिजाइन नहीं करता. क्यों? ये आरएल बट नॉट रिकर्सिव लैंग्वेज है. एवरीबॉडी, इसको कॉम्प्लीमेंट किया ना, ट्यूरिंग मशीन नहीं होता. क्यों? ये डब्ल्यू नॉट बिलोंग्स टू लॉजिक नहीं है. एवरीबॉडी, इसका मीनिंग है वही है, एल हैज टीएम बराबर है. अगर कॉम्प्लीमेंट करके देखा ना, टीएम नहीं मिलेगा. क्यों? नॉट बिलोंग्स टू लॉजिक नहीं है ना. एल कॉम्प्लीमेंट हैज नो टीएम, तभी बोल सकते, तभी. रिमेंबर दैट, राइट? इफ एंड ओनली इफ एल इज आरएल बट नॉट रिकर्सिव.
किसी को प्रूव करना आर रियल बट नॉट रिकर्सिव, शो दैट इसके लिए ट्यूरिंग मशीन है, इस कॉम्प्लीमेंट के लिए ट्यूरिंग मशीन नहीं है, बस इतना प्रूव करो, काम खत्म। कल से यही तो करेंगे ना, 2 दिन तक यही करेंगे हम। आज सिर्फ डेफिनेशन की बात चल रहा है एवरीबॉडी, पता नहीं कितना देर चलने वाला है। अब तक एक ही वर्ड हुआ, सेकंड वर्ड चल रहा है। यस, आगे चलते। प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है गाइस। अगर कोई भी पी, ये प्रॉब्लम है, पी इज आर ई बट नॉट रिकर्सिव। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम समझ लेना, क्वेश्चन मार्क लगा के एस आर नो बोल सकते क्या, ऐसे वाले हैं। ओके, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? ये इनपुट कौन है? वन है, मोर है, डिपेंड्स। कितने भी इनपुट्स होंगे, आपको कुछ चेक करना है, वेरीफाइंग इनपुट्स। इनपुट्स है यहाँ पर, इनपुट और इनपुट्स, दैट इज योर चॉइस। व्हाट यू वांट टू डू? You want to verify something inside the input. Inside the input, something you want to verify, right? You are verifying some property in given inputs. अगर yes के लिए लॉजिक है, no के लिए लॉजिक नहीं है, ये प्रॉब्लम है। This is one problem P. If you prove that logic exists for S, and no मतलब लॉजिक, नो मतलब नहीं, नो के लिए लॉजिक बिल्कुल नहीं है, लॉजिक नॉट एग्जिस्ट, तब होगा ये प्रॉब्लम इज आउटसाइड द डिसाइडेबल, इनसाइड द सेमी डिसाइडेबल। सेम है। ऑलराइट, क्लियर? इसको ही बोल सकते P इज SD एंड UD। दूसरा नाम है SD एंड UD। इसको आरियली बोलते हैं बट लेकिन अनडिसाइडेबल बोलते हैं, आरियली बोलते हैं अनडिसाइडेबल। दूसरा नाम लिख सकते हैं ऐसे, P is REL and UD। UD means not decidable, not recursive। वही तो सारे नाम सेम है गाइस, अलग अलग फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। ओके, let's go on। Yeah, SD plus UD, good। आगे चलते। और not RE, ये not RE लैंग्वेज क्या होता? not RE मतलब यही गाइस, ये तो डिसाइडेबल से, ये तो सेमी डिसाइडेबल से, ये जो बाहर है ना वो नॉट आरियल्स है, एनआर मतलब समझ लो नॉट आरियल्स। एवरीबॉडी, ये जो बीच में है ना ये एसडी एंड एसडीस एंड यूडिस है। क्यों यूडिस? यहां से यहां तक होता है यूडिस। क्लियर? मैं अभी नॉट आरियल में जा रहा हूं। नॉट आरियल मतलब सेमी डिसाइडेबल से बाहर वाली, वो नॉट सेमी डिसाइडेबल बोल सकते। ये दूसरा नाम दे रहा हूं उसको, नॉट सेमी डिसाइडेबल बोलते हैं, दूसरा नाम नॉट सेमी डिसाइडेबल्स। you can say that। now let's start। L is a language which is called as not REL if and only if L has no Turing machine। Devraj, undecidable doesn't mean that we don't have a TM। इनका बात मान लो, अनडिसाइडेबल वर्ड मतलब इनको समझ नहीं आ रहा है। अनडिसाइडेबल मतलब नॉट डिसाइडेबल, नॉट डिसाइडेबल। इनका क्वेश्चन बहुत सही है। अनडिसाइडेबल के लिए ट्यूरिंग मशीन क्यों है? कब समटाइम्स क्यों? अनडिसाइडेबल मतलब नॉट डिसाइडेबल है। नॉट डिसाइडेबल मतलब वी आर नॉट सेइंग नॉट ट्यूरिंग मशीन, वी आर सेइंग देयर इज नो HTM, there is no halting Turing machine, but Turing machine may exist, may not exist, that depends on the problem। समझ लो बात। ऐसे ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ट्यूरिंग मशीन नहीं है बोलने के लिए। एवरीबॉडी, थैंक यू नजीर। देवराज, ये आपके लिए है बात। Undecidable doesn't mean Turing machine not exist। Undecidable means I don't have halting Turing machine,
I don't have halting Turing machine. Everybody याद रख लेना, अनडिसाइडेबल की बात अलग है. I don't have, we don't have halting Turing machine. Turing machine हो सकता, नहीं हो सकता, that depends on which undecidable you are talking about. Clear? देवराज आप लाइक कर सकते हैं, अब तक लाइक नहीं किया, मैं देख रहा हूं. प्लीज लाइक इट. इतना डाउट्स क्लियर किया ना, प्लीज लाइक द सेशन. देवराज चलो, थैंक यू. यू हैव टू कमेंट योर डाउट इज सॉल्व्ड और नॉट. चलो, बात को किसी को भी डाउट होता है ना, पूछ लेना. डाउट लेना नहीं लेना ये मेरा जिम्मेदारी है. डोंट अज्यूम आई विल क्लियर एवरी डाउट. ओके, क्लियर. RE but not recursive is over. Not RE abhi, not RE. L has no TM means you can say now so many names. L is not semi decidable. ये भी बोल सकते हैं ना, REL मतलब वही तो है. L is not semi decidable. और क्या बोल सकते हैं, बहुत है नाम, बाद में देखेंगे, ये क्लास के एंड में देखेंगे कितने नाम होता है इसको. आर यू क्लियर? आप तो वर्ड समझ लेना. एवरीबॉडी, अब से, आज से कोई भी पूछा नॉट REL क्या है, यस, नॉट REL मतलब क्या है. नॉट REL मतलब इफ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड ए मशीन, अज्यूम ये कोई भी ऐसे है, ये मशीन है, अज्यूम दैट मशीन है. यस, कुछ नो, we don't worry whether we have a logic or not. Remember that too. We don't worry logic exists or not. Remember, we worry. We have already proved yes has no logic. It has no logic. Logic not exist. अगर S के लिए प्रूव किया लॉजिक नहीं है, बोल दो सीधा no TM for L, no machine, no Turing machine for L. L को बोलते हैं नॉट REL. एवरीबॉडी, whenever you say L is not REL, बोल दो S के लिए लॉजिक नहीं है, लेकिन नो के लिए मत बोलना. डोंट वरी अबाउट नो. आई एम वार्निंग एवरीबॉडी. शुड नॉट टॉक अबाउट, यू शुड नॉट वरी अबाउट, W not belongs to L. Remember, you should not worry about, because we know just W belongs to L has no logic. No TM exists for S. Exactly. Don't say something about W not belongs to L. मत बोलना. Don't worry about here. Don't worry about this. Clear? किसके लिए worry? वो previous to machines के लिए, previous to names के लिए. इस word के लिए सिर्फ S हो गया आंसर. चलो, not RE problem guys, not RE problem. अगर बोल रहे हैं P है, P is not recursively enumerable problem. Abbreviation याद रख लेना, recursively enumerable problem. If and only if S of P has no logic. इसका मतलब there is no TM exist to solve the problem P. Right. बोलना जरूरत नहीं, इतना बहुत है. सॉरी, इतना बहुत है इसके लिए. एवरीबॉडी, S of P has no logic. नो के लिए बात मत करना, बस है, S के लिए बहुत है. S has no logic. Yes, no is important for both. किसके लिए? रिकर्सिव के लिए, REL but not recursive, दोनों के लिए. क्या प्रूव करना? रिकर्सिव में नो के लिए लॉजिक है, RE but not recursive के लिए नो लॉजिक नहीं है. ये प्रूव करना इंपॉर्टेंट है. Remember, अन्वेषा, no is important for both the previous problems. वह प्रूव करना पड़ेगा लॉजिक है नहीं, यहाँ कुछ जरूरत नहीं है. एवरीबॉडी, तो इफ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड सम इनपुट्स आर देयर, इनपुट्स, ये कुछ प्रॉब्लम है दुनिया में, इसके लिए यस होगा, नो होगा. नो, डोंट वरी अबाउट नो, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू चेक. यस, प्रूव दैट लॉजिक नॉट एग्जिस्ट. बस हो गया आंसर. देन वी से दिस प्रॉब्लम इज नॉट RE.
कोई कंप्यूटर, कोई लॉजिक नहीं है कंप्यूट करने के लिए। यस चलो आगे चलते। ये तीनों हो गए ना, तीनों हो गए ना। अब तीनों से पूरा दुनिया को समझ सकते हैं आप समझ लिया कुछ बात। I have not used two words. One, I've used decidable word, yes or no, language or problem. Other word I used RE but not recursive. Another word not RE, yes or no. जो language है problem है, यही थी word use किया ना। I have not used two words guys. Undecidable एक word है, दूसरा word है semi decidable. Guys ये याद रख लेना, आपका दिमाग इस तरफ चलना चाहिए लेकिन आंसर दोनों तरफ चलना चाहिए। दिमाग अलग है, आंसरिंग अलग है, याद रख लेना गाइस। ऐसे होता है ना, आप इतना पढ़ के जाते एग्जाम से पहले, बोले एग्जाम में कुछ और फेस करते, एग्जैक्टली सेम है। पूरा दुनिया राइट साइड पे बात करता गाइस, पूरा दुनिया इसके लिए बात करता है, लेकिन हमको समझना ये है आंसर मीनिंग इज हियर, लेकिन आंसर इज हियर। तो आंसर कुछ और करते हैं हम, पढ़ते कुछ और है एवरीबॉडी। तो अब यही बात है गाइस। अब बताओ आपको डिसाइडेबल समझ लिया, आंसर इज डिसाइडेबल, क्या बोल सकते हैं उसको, डिसाइडेबल भी बोल सकते हैं, ऐसा नो, बट उसको सेमी डिसाइडेबल भी बोल सकते चाहिए। तो क्यों एवरी डिसाइडेबल इज व्हाट, एक डायरेक्शन देख लो, इस तरफ नहीं, रिवर्स नहीं, कन्वर्स नहीं। देवराज कल पूरा दिन प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे ना। आज तो मैं क्या बताया आपको, कॉन्सेप्ट्स, सिर्फ वर्ड्स को समझ लो, इनको अभी प्रॉब्लम करना है, यही तो प्रॉब्लम है इनको। डेफिनेशन ही नहीं आता इनको, जाके प्रॉब्लम सॉल्व करना। पहले डेफिनेशन को फॉलो करो, इसको एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई करते बाद में देखते ना। व्हेन आई आस्क टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर, एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे ना। और अगर आर यू बट नॉट रिकर्सिव है गाइस, क्या बोल सकते हैं इसको अनडिसाइडेबल भी बोल सकते हैं, इसको सेमी डिसाइडेबल भी बोल सकते हैं। अगर नॉट आ रही है सिर्फ इसको अनडिसाइडेबल बोल सकते हैं, सिर्फ रिमेंबर दैट, है ना। सी गाइस, यू आर फॉलोइंग फ्रॉम द बिगिनिंग। डिड आई एवर solve the problem directly without the concept? Did I solve ever? Because my mentality is different. Remember, keep the patience, have a patience, right? इनको अभी एग्जाम्पल चाहिए, थोड़ा फॉलो कर लो वर्ड्स। एग्जाम्पल दूंगा कब, अभी 1 घंटे में खत्म नहीं होगा ना ये, 2 घंटे, एक प्रॉब्लम के लिए मुझे 1 घंटे चाहिए, डेफिनेशन कब होगा, राइट। आगे चलो, इज दैट क्लियर? इफ द आंसर इज डिसाइडेबल, आप डिसाइडेबल भी बोल सकते हैं, सेमी डिसाइडेबल भी बोल सकते हैं। बट अगर सेमी डिसाइडेबल है गाइस, मत बोलना सब कुछ, ये सेमी डिसाइडेबल कोई भी हो सकता, ये सेमी डिसाइडेबल आके ये भी बन सकता, कभी ये भी बन सकता, समटाइम्स, मतलब सेमी डिसाइडेबल इज वेरी डेंजर। एवरीबॉडी, डिसाइडेबल को हमेशा सेमी डिसाइडेबल बोल सकता, लेकिन सेमी डिसाइडेबल को हमेशा डिसाइडेबल नहीं बोल सकते हम, डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। एवरीबॉडी, ऐसे बात अनडिसाइडेबल में भी होता, अनडिसाइडेबल भी ऐसे होता गाइस। कैसे होता? ये अनडिसाइडेबल की बात कहां से ले आऊं, ये इसको आरई भी बोल सकता और इसको नॉट आरई भी बोल सकता, ये समटाइम्स होगा, ये भी समटाइम्स होगा, मतलब वेरी वेरी डेंजरस वर्ड्स गाइस। क्लियर दिस पॉइंट? देखो कितना डिफरेंस है, वर्ड्स को समझना इतना इजी तो नहीं है ना गाइस। आज तक जो क्लैरिटी अब मिल रहा है, इससे पहले कभी मिला क्या? इस वर्ड्स को ऐसे गेम प्ले कर सकते हैं हम। मेरे पास एक ही सेंटेंस है गाइस, द TOC इज अ गेम ऑफ वर्ड्स। अगर ये वर्ड्स को समझ नहीं किया, डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम, सब कुछ बेकार है, एवरीबॉडी। अब बताओ, वेयर डू यू वर्क मच, लेफ्ट साइड और राइट साइड? एवरीबॉडी, लेफ्ट साइड और राइट साइड, वेयर डू यू वर्क मच, लेफ्ट साइड और राइट साइड? लेफ्ट साइड में वर्क करो, जो आंसर चाहिए वो करो आंसर, एवरीबॉडी। या अब चलते, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं सबसे, अगर मुझे समझ में आया L is RE but not recursive,
है ना। देन एल को क्या क्या बोल सकते हैं यार, बोल दो दुनिया में क्या क्या बोल सकते हैं। वन डायरेक्शन है ना, इंप्लाइज है, इंप्लाइज है, क्या क्या बोल सकते हैं बोलो। इसको आरईएल भी बोल सकते हैं, इसको नॉट रिकर्सिव भी बोल सकते हैं, इसको सेमी डिसाइडेबल भी बोल सकते हैं, इसको और अनडिसाइडेबल भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, है ना। बहुत कुछ नाम है गाइस, बहुत कुछ नाम है, क्यों ऑलरेडी पता है ना ये आरईएल के अंदर है, डिसाइडेबल से बाहर है, तो आरईएल भी बोलो चलेगा। वन डायरेक्शन है ना, नॉट रिकर्सिव बोलो चलेगा, एग्जाम में बहुत सारे होता ना। और एसडी एंड यूडी भी बोलो चलेगा, राइट। 1 2 3 4 5 ऑल आर करेक्ट। व्हाई? बिकॉज वन डायरेक्शन सही है, बाई डायरेक्शन गलत है। अगर इसकी जगह इफ एंड ओनली इफ होता ना, सब बहुत गलत होता है। यहां पर याद रख लेना, ये इज है, इज मतलब वन डायरेक्शन है। क्लियर दिस पॉइंट? वह इफ एंड ओनली इफ होता ना, बी केयरफुल, इफ एंड ओनली इफ ऑलरेडी बता दिया डेफिनेशन, राइट। चलो आगे चलते गाइस। बिफोर डूइंग अदर थिंग्स, यू नो व्हाई वी ऑलवेज रिकमेंड प्लस एंड आइकॉनिक गाइस। अब तो यू आर आस्किंग एनीथिंग, आई एम गिविंग क्लैरिफिकेशन ओनली टू सम डाउट्स, बट अनअकैडमी के अंदर आप ऐसे लगता आपके सामने ही मैं पढ़ा रहा हूं, आपकी हर डाउट तुरंत रिप्लाई होगा। एवरीबॉडी, अब तो मैं जो रिप्लाई कर सकता वो करूंगा मैं अभी, लेकिन अनअकैडमी वो नहीं होता, इट जस्ट लुक्स लाइक 1-to-1 इंटरेक्शन गाइस। इसलिए हम प्रीफर करते, प्लीज ज्वाइन अनअकैडमी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022 एंड 2023। इन केस इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग, प्लीज refer other students or other friends who want to prepare, and you will have structured courses from all educators, top educators of India, and multiple courses for the same subject, and study as per your interest, learn from top educators and study with proper planning। and क्या नहीं है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, बहुत है, ठीक है। चलो आगे चलते। अब ये बात है, ये सेमी डिसाइडेबल किसको बोलते हैं यार? अब आप बताओ, डेफिनेशन हो गया ना, एक आंसर तो हो गया। अब आप बताओ क्या होगा। L is REL if and only if L has a TM, बस इतना। HM बारे में मत बोलना, HM हो सकता नहीं हो सकता, कमान ये क्या है, सेमी प्लस अनडिसाइडेबल। इसके अंदर दो होता, इफ एंड ओनली इफ either L is decidable or ye but not recursive। यार सेमी डिसाइडेबल यूज मत करना यार, अनडिसाइडेबल ये वर्ड्स, ये इसलिए मैं ये डेफिनेशन दे रहा हूं, आर ये बट नॉट रिकर्सिव। इसके अंदर दो टाइप की लैंग्वेज होता, आइदर वो डिसाइडेबल होना चाहिए, नहीं ये तो आर ये बट नॉट रिकर्सिव, लेकिन दोनों तो आरईएल है, दोनों तो आरईएल है। एवरीबॉडी, दोनों के लिए ट्यूरिंग मशीन है, दोनों के लिए ट्यूरिंग मशीन है, लेकिन डिसाइडेबल के लिए दो होता, ट्यूरिंग मशीन भी होता, वो आल्टिंग ट्यूरिंग मशीन भी होता चाहिए तो। क्लियर दिस पॉइंट? बस इतना कहना है, वैलिड स्ट्रिंग्स, दिखाता हूं, वैलिड स्ट्रिंग्स ऑफ एल हैज लॉजिक, एंड डोंट वरी अबाउट इनवैलिड। क्यों मैं आरईएल बोल रहा हूं ना, डोंट वरी अबाउट इनवैलिड, उसके लिए होता नहीं होता वो अलग है। दिस इज अ नोट फॉर यू। रिकर्सिव अनदर नेम इज डिसाइडेबल ना, डिसाइडेबल को ही रिकर्सिव बोलते हैं ना, पहले से स्टार्ट करके लिख के आ रहा हूं, क्या पढ़ रहा है एवरीबॉडी? या वैलिड स्ट्रिंग्स ऑफ एल हैज अ लॉजिक, इनवैलिड होगा नहीं होगा, दैट डिपेंड्स ऑन विच सेमी डिसाइडेबल यू आर टॉकिंग। वो सेमी डिसाइडेबल के अंदर डिसाइडेबल है और अनडिसाइडेबिलिटी है। चलो आगे चलते हैं। इसका मीनिंग है अगर L इज REL तो उसके लिए ट्यूरिंग मोशन प्रूव करना, दिस एक्सेप्ट्स L, नो डाउट। क्या प्रूव करना? W belongs to L, prove that, show logic exists, that's all. Don't worry about other, don't worry about invalid। W not belongs to L, don't worry, होता नहीं होता वो अलग बात है। क्लियर? उसके लिए लॉजिक होगा, ये प्रॉब्लम रिकर्सिव होता, इसके लिए इनवैलिड के लिए लॉजिक नहीं है तो वो आरईएल बट नॉट रिकर्सिव।
ये आरईएल के अंदर दो प्रॉब्लम होता, डिसाइडेबल भी है और आरईएल बट नॉट रिकर्सिव भी है. डिसाइडेबल है, नॉट डिसाइडेबल, दो होता आरईएल के अंदर. एवरीबॉडी जस्ट शो दैट आई हैव ए टीएम, जस्ट शो दैट, डोंट शो दैट आई हैव एचटीएम, वो प्रूव नहीं करेंगे हम. आई हैव ट्यूरिंग मोशन, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल. HTM होगा नहीं होगा, God knows really, because you need to show me particular language, then I can prove it. Next guys, same है, same डिसेबल प्रॉब्लम है. अगर कोई प्रॉब्लम पूछे तो प्रॉब्लम P is recursively enumerable problem. कब बोलेंगे yes has logic, but don't say S only has a logic, wrong. S has logic, that's all. No के लिए होगा नहीं होगा, we don't know. Don't worry about no. Don't worry about no. No may have a logic, no may not. This is a note. Because I want to talk about recursively enumerable. Don't think about recursive, don't think about somebody else. Now, आगे चलते फटाफट कर लेते. Undecidable किसको बोलते guys? Undecidable. Language. L is undecidable. If and only if anybody, it means L is not decidable. It means if and only if L has no alternating Turing motion. L has no alternating Turing motion. It means L might have a Turing motion or L may not have a Turing motion. Two things guys. L is not decidable means if and only if L is REL but not recursive. It's either, remember that, or L is not REL. Turing motion होगा नहीं होगा, but लेकिन alternating Turing motion नहीं होगा कभी. समीर TM नहीं है, HTM बोलो यार. इनको ये TM क्यों बोल रहा है यार? TM क्यों बोल रहा है? alternating Turing motion बोलो समीर. Turing motion हो सकता है undecidable लैंग्वेज के लिए, REL but not recursive. इसके लिए ट्यूरिंग मोशन है, ट्यूरिंग मोशन है. ये प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल है गाइस. अनडिसाइडेबल दो टाइप होता, कुछ प्रॉब्लम्स के लिए ट्यूरिंग मोशन है, कुछ प्रॉब्लम्स के लिए ट्यूरिंग मोशन नहीं है. इसलिए बोल रहा हूं ये इस वर्ड, गेम ऑफ वर्ड्स. वर्ड जब तक दिमाग में नहीं घुसता ये आंसरिंग भी नहीं होता. ये चैप्टर ऐसे वाली है. एवरीबॉडी इतना मेहनत कर रहा हूं, ये जिस वर्ड्स को बार बार उसी को बोल रहा हूं, फिर भी बार बार गलत कर रहा है आप लोग. क्लियर? अनडिसाइडेबल, इसलिए मैं लिखा था ऐसे है. ठीक है, थोड़ा देर के बाद रिवाइज कर लेता हूं. अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, P इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम. कब बोले अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम? इफ एंड ओनली इफ. कब बोले गाइस? When we say undecidable problem, it's not decidable means, come on, you cannot prove, we can't prove. Both yes and no, both we are talking about have logics. What we can prove? Yes might have a logic, or no might have a logic, or both may not have a logic. We don't know. Are you clear? Only yes might have a logic. Remember that. Both we can't prove, but we may prove two things. We can prove two things. What are they? One, only yes has a logic. Only yes has a logic. Or second, yes has no logic. क्यों इसमें दो प्रॉब्लम्स है ना, तो इसको बोलना ऐसे, if and only if P is RE but not recursive, or P is not RE. तभी बोल रहे ना, either this one or this one. If not decidable, may or may not be RL. अब चलते पूरा घुमा के आते गाइस. अब बताओ जो अभी तक पढ़ लिया, ये है डिसाइडेबल्स.
ये जो प्रॉब्लम से लैंग्वेज आप डिसाइड करो, ये है आर ही बट नॉट रिकर्सिव्स। ये प्रॉब्लम से लैंग्वेज आप डिसाइड करो। सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो दिमाग कभी कभी नहीं चलता, मैं तुरंत लिख रहा हूँ। ये मान लो ऑल आर ईज, इसको डिसाइड है ये आर ईज बट नॉट रिकर्सिव्स। ये है पूरा दुनिया बाहर वाले, नॉट आर ईज। एवरीबडी अब बताओ क्या क्या है मीनिंग। ये क्या बोलते, एल है, L1 मान लो, इसको L2 मान लो, इसको L3 मान लो, जो जो आपका पॉसिबिलिटी है सब कुछ बता दो। L1 क्या है, व्हाट इज L1? स्पेस चाहिए ना गाइस मुझे, तो इस तरफ लिख लेता हूँ, सॉरी इस तरफ लिख लेता हूँ इसको। ए है ऑल नॉट आरियल्स, नॉट आरियस, प्रॉब्लम है लैंग्वेज है, इट्स योर चॉइस। अब बताओ ये L1 का नाम क्या है, L1 का नाम क्या है? ये डिसाइडेबल है, ऐसा नो? ये बाय इम्प्लीकेशन, क्यों L1 हमेशा डिसाइडेबल है, डिसाइडेबल में एक L1 है वाली, बट L1 को इस तरफ आर ही भी बोल सकते, क्यों? ये आर ई एल्स के अंदर है ना। इफ नॉट डिसाइडेबल मे आर मे नॉट बी आर एल, कई बार भी हो सकता है ना। L1 क्या बोल सकते हैं, और L1 को सेमी डिसाइडेबल भी बोल सकते हैं, ऐसा नो? L1 को और क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं L1 को, और क्या बोल सकते हैं, बोलो सब कुछ, और क्या बोल सकते हैं? L1 इज अ रिकर्सिव, बोलो चलेगा रिकर्सिव, क्यों डिसाइडेबल, ये बाय इम्प्लीकेशन नाम है। एवरीबॉडी तो अगर आपको समझ लिया ये L1 है, मतलब ट्यूरिंग मोशन होगा, ऑल्टरिंग ट्यूरिंग मोशन होगा, ये डिसाइडेबल है, ये रिकर्सिव है, सब कुछ बोल सकते हैं हम। बट कैसे बात कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, विच डायरेक्शन यू आर स्पीकिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ लिया L1 के बारे में, समझ लिया सब लोग। L1 को कभी अनडिसाइडेबल नहीं बोलेंगे, क्यों? ऑल्टरिंग ट्यूरिंग मोशन है, एग्जिस्ट है ऑल्टरिंग ट्यूरिंग मोशन। ओके, सेकंड वर्ड बारे में बोलो गाइस। ओके, L2 बोलो, L2 क्या है? L2 क्या है, एग्जैक्ट नाम क्या है? आर ही बट नॉट रिकर्सिव, ऐसा ना। और L2 को क्या बोल सकते हैं, और सिर्फ आर ही बोलो चाहिए तो चलेगा, वन डायरेक्शन ओनली, राइट? पहली वाली तो बाई डायरेक्शन है। और क्या बोल सकते हैं, सेमी डिसाइडेबल, बिकॉज ये सेमी डिसाइडेबल अंदर है, ये आर ही का दूसरा नाम है, सेमी डिसाइडेबल है। और क्या बोल सकते हैं, इसको नॉट डिसाइडेबल भी बोल सकते हैं, क्यों? डिसाइडेबल से बाहर है। और इसको अनडिसाइडेबल भी बोल सकते हैं। और बाई डायरेक्शनल नाम है वो SD एंड UD। क्लियर? देखो एक नाम है, कितना है इसके अंदर दम। क्लियर? एक नाम इंप्लीकेशन अलग होता, बाई इंप्लीकेशन अलग होता। एग्जाम में इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, अब क्या बोल सकते हैं, और HTM डजंट एग्जिस्ट, गुड पॉइंट, बट TM एग्जिस्ट। TM एग्जिस्ट बट कंडीशन इंपॉर्टेंट, बट HTM डजंट एग्जिस्ट, ए बाई इंप्लीकेशन है। जब डजंट एग्जिस्ट बोला बाई इंप्लीकेशन होता। TM एग्जिस्ट, वो आधा बोल रहा है, TM एग्जिस्ट बट HTM डजंट एग्जिस्ट, क्लैरिटी, आर यू बट नॉट रिकर्सिव, राइट? ये L2 है, ये L2 है गाइस, ये L2 है। एवरीबॉडी कैन आई गो फॉर अनदर नेम? या लेट्स मूव ऑन। और L is not REL, not RE, not RE। ओके, ये प्रॉब्लम है, लैंग्वेज छोड़ो। क्या क्या बोल सकते हैं? L is तो क्या है, L4 लिखो, सीधा लिखा होगा ना, छोड़ो। L4 बारे में बोलो, L3 कहाँ गया? L3 नहीं लिखा, ओके ठीक है। L4 क्या क्या है? ये नॉट RE प्रॉब्लम है और लैंग्वेज है, ये बाई इम्प्लीकेशन बोल रहा हूँ। और क्या क्या बोल सकते हैं इसको दूसरा नाम है नॉट सेमी डिसाइडेबल गाइस, नॉट सेमी डिसाइडेबल दूसरा नाम है वो। या नेक्स्ट, इट इज अनडिसाइडेबल, बट बाई इम्प्लीकेशन नहीं, सिर्फ वन डायरेक्शन है वो। अनडिसाइडेबल नीड नॉट बी नॉट RE, रिमेंबर दैट। और क्या है?
नॉट डिसाइडेबल। और क्या है, नो टीएम एग्जिस्ट। नो टीएम एग्जिस्ट मतलब वही तो है प्रॉब्लम। यस या सो बहुत सारे नाम से ऐसे बहुत सारे। यूडी, ये यूडी है, एंड नॉट एसडी दोनों मिला के भी बोल सकते हैं, एग्जैक्ट नाम है वो, ये बाई इंप्लीकेशन है वो। क्लियर everybody? And these are the names you need to be careful how to use, and as long as you don't keep all the words in mind, I don't care whether you solve the problems or not, because all the problems depends on the definitions, and definitions have everything in this chapter. Okay, now move on. Conclusion guys, conclusion, final conclusion. Look at guys, two ways I can answer, two ways guys, not too many ways. Let's look at how many ways you can answer. एक लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज थ्री टाइप की सोचो हमेशा हमेशा गाइस। एक डिसाइडेबल, एक आरई, ये बेस्ट वे इन द वर्ल्ड टू आंसर एनी प्रॉब्लम। दूसरा है नॉट आरई। जब आपको क्लैरिटी मिल गया ना, ये डिसाइडेबल को और आरई बट नॉट रिकर्सिव को सेमी डिसाइडेबल बोल सकते हैं, और इसको और नॉट आरई को अनडिसाइडेबल बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर दिस वर्ड? इज दैट क्लियर? दोनों सेम है यार, ये मैं कब से बात कर रहा हूँ। इंग्लिश वर्ड्स को टेक्निकली क्यों इतना कंफ्यूज कर रहा है? अनडिसाइडेबल, इसका दूसरा नाम है नॉट डिसाइडेबल, इसका तीसरा नाम है नॉट रिकर्सिव। क्या यार, क्या पढ़ते हैं आप लोग? राइट, अनडिसाइडेबल इसलिए बोलते हैं ये डिसाइडेबल से बाहर है। चलो एवरीबॉडी, ये सारे सिनोनिम्स है, सारे सिनोनिम्स है यार, ठीक है। एवरीबॉडी क्लियर? और एक बात है, और एक बात है, रिमेंबर दैट फाइनाइट लैंग्वेज, देखो ये वर्ड्स कहां से आता? फाइनाइट सेट को रेगुलर बोल सकते, रेगुलर सेट को DCFL बोल सकते, DCFL सेट को DCFL को CFL बोल सकते, CFL को CSL, CSL को डिसाइडेबल बोल सकते। क्यों? रिकर्सिव की दूसरा नाम है ना, और डिसाइडेबल को सेमी डिसाइडेबल बोल सकते हैं। क्यों? REL का दूसरा नाम है ना। बस इतना सारे घुमा सकते हैं आप, मतलब एवरी फाइनाइट इज सेमी डिसाइडेबल, एवरी रेगुलर सेमी डिसाइडेबल, DCFL, CFL, CSL, डिसाइडेबल, all are semi disciple guys, because all are having Turing machines. everybody, but देखो दूसरा नाम, and not RE कोई बोल रहा है। when you say not REL मतलब REL से बाहर है, इसका मीनिंग है not सेमी डिसाइडेबल है, इसका मीनिंग है not डिसाइडेबल है, इसका मीनिंग है not CSL है, इसका मीनिंग है नॉट CFL है, इसका मीनिंग है नॉट रेगुलर है। ऐसा कुछ बहुत कर सकते हैं हम। REL से बाहर है मतलब सबसे बाहर है अंदर। एवरीबॉडी, इंडिया से बाहर है इनडायरेक्टली, दिल्ली से बाहर है, हैदराबाद से बाहर है, और कुछ भी बोलो सबसे बाहर है। ये रिलेशंस इतना जल्दी समझ नहीं आता, लेकिन बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया अब तक, राइट? चलो आज घर जाके इसको संभाल लेना। एवरी वर्ड ट्राई टू रिप्रेजेंट क्लियरली ऑन द पेपर वन मोर टाइम एंड अंडरस्टैंड देम केयरफुली, राइट? चलो कल से प्रॉब्लम स्टार्ट करते। आज सिर्फ मैं इतना बताया, वर्ड्स इंट्रोड्यूस्ड एंड डेफिनेशंस एक्सप्लेन्ड। कल, ये आज की बात है, कल से स्टार्ट होता एग्जाम्पल्स एंड प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल्स एंड प्रॉब्लम्स कल से स्टार्ट होता, फ्रॉम टुमारो। 2-3 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर लेते, 3 दिन और कर लेते इसको। एवरीबॉडी, चलो आज यहाँ पर समझ ले हम डिसाइडेबल मतलब एस नो लॉजिक होना चाहिए, सेमी डिसाइडेबल नहीं बात करना, RE बट नॉट रिकर्सिव, एस के लिए लॉजिक है, नो के लिए लॉजिक नहीं है, नॉट RE यस के लिए लॉजिक नहीं है, नो के लिए कुछ भी हो सकता है। व्हेन सेमी डिसाइडेबल यू आर सेइंग यस के लिए तो लॉजिक है बट नो के लिए बात मत करना। अनडिसाइडेबल इतना बोल सकते, ऑल्टिंग ट्यूरिंग मशीन नहीं है। एवरीबॉडी,
Yeah, please rewind this video and watch 3 to 4 times if required, but words को याद रख लेना, definitions को समझ लेना. Words remember, definitions understand. Words remember, अगर ये remember नहीं है आप गेम नहीं खेल सकता. और इसको understand. और कल we will apply. मतलब if you want to apply properly, then first remember the words, then understand the definitions, then you are ready to apply as per my explanation. Okay, चलो कल मिलते हैं हम how to apply this knowledge on the problems and examples tomorrow. Guys, tomorrow if you want to attend my classes, please, I have shown in the beginning of the video also, you can attend my free sessions except the third session. All the sessions are absolutely free. Please attend, and so many classes are going on this channel. Attend all possible sessions that you require, and if you don't know about Plus and Iconic, and you are always welcome to discuss with us, and this is my referral code to unlock free classes and also the Plus or Iconic subscription. If you want to use my code, you're always welcome. Okay, this is my profile to access all my free classes, and follow me to get daily notifications of my live classes, and you can subscribe to our Telegram channel, and you have so many free YouTube channels from Unacademy. You can share with your friends if you feel that these channels are helpful to prepare. And please like the session and share if you are enjoying, and subscribe. Don't forget about it. Thank you so much. Yeah. See you tomorrow. Thank you so much. Bye-bye. Take care. Yeah, bye. Devraj, Shubhasri, Samir. Yeah, bye-bye. Yeah, Sambhav. Bye. Take care. Yeah, Aarti. Yeah, bye-bye. See you. See you guys. Take care.